Well, hours after pictures of a Uttar Pradesh police officer smashing the typewriter of a 65-year-old man went viral, the Uttar Pradesh government has cracked the whip. The corpse has now been suspended from his duty for abusing Krishna Kumar and damaging his typewriter. The pictures created a massive outrage on the social media, where the accused cop, Pradeep Kumar, kicked the typewriter repeatedly while the old man begged with folded hands. The typewriter was his only source of income for the last 35 years. After the pictures went viral, the corp's senior officials, in fact, suspended the accused cop and 65-year-old Krishna Kumar, who in fact has been given 2 typewriters by the Lucknow district magistrate and the superintendent of police. मशीन से पकड़ते संभालते हाथ से छीन ली मशीन, फिर लात मार दी मशीन पे, मशीन हमारी गिर पड़ी। जब गिर पड़ी मशीन तो ऐसे ही पकड़ा उन्होंने और पकड़ के उठा के ऐसे फेंक दिया। ऐसे फेंक के साहब वहाँ 2 टुकड़े हो गए मशीन के हमारे। हमको साहब टाइपराइटर दिया दूसरा। हाँ जी, हम संतुष्ट हैं। ये संज्ञान में आया था कि यहाँ पर सचिवालय पर एक चौकी आया, तो चौकी इंचार्ज था प्रदीप कुमार। उन्होंने एक टाइपराइटर से कृष्ण कुमार थे, इनके जो टाइपराइटिंग मशीन थी इसको लात से मार दिया था। ये संज्ञान में आया, तत्काल एसएसपी साहब द्वारा और उसको सस्पेंड कर दिया गया है।